हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू आर डूइंग फिट एंड हेल्दी। तो पिछले व्लॉग में अच्छा एंगेजमेंट था। आई गॉट नाइस व्यूज। सो माय नाइस व्यूज इज लाइक मोर देन 200 व्यूज इज अ नाइस व्यूज फॉर मी। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत लोगों ने बोला यस इट्स अ गुड वीडियो यू हैव डन, एडिटिंग अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है। बट और एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन था, इज दिस रियली यूट्यूब कुछ पैसा नहीं देता है? अगेन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको कुछ क्राइटेरिया दिया रहता है, आपको कुछ क्या बोलते हैं टारगेट्स दिया रहता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू शुड हैव व्हेन यू वांट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। उसके बाद चैनल रिव्यू हो जाता है, फिर जब रिव्यू होके वापस आता है उसके बाद आपको अर्निंग्स मिलता है, एंड दैट्स द क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव। अभी बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि if you don't earn from YouTube, तो how you earn? Means how you manage your day-to-day life. So by professional wise, I am an IT resource. I am an IT employee, और उसमें भी IT में I am a system engineer. It's also known as system administrator. आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स में, लाइक व्हाट इज सिस्टम इंजीनियर, हाउ कैन यू गेट अ जॉब इन सिस्टम इंजीनियर, व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी दैट यू कैन गेट अ जॉब इन सिस्टम इंजीनियर, एजुकेशन कितना चाहिए सिस्टम इंजीनियर के लिए, एंड फाइनली सबको मैटर करता है वो है पैसा। पैसा कितना मिलता है सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम इंजीनियर? सिस्टम इंजीनियर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गूगल में जाके टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली व्हाट वी डू इज दैट वी डू मॉनिटरिंग, वी डू इंस्टॉलिंग एंड वी चेक इफ द सर्वर्स आर हेल्दी और नॉट। बेसिकली सिस्टम इंजीनियरिंग में बहुत सारे जॉब रोल्स डिफाइंड है, जैसे कि विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मैं हूँ, उसके बाद लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, देयर आर लॉट्स ऑफ, अभी आपने सुना रहेगा AWS एडमिनिस्ट्रेटर, फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडमिनिस्ट्रेटर, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर। सो बहुत सारे जॉब रोल डिफाइंड है, उसमें वन ऑफ द थिंग इज विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और जो कि मैं हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ वो जॉब का। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने जितना भी फेसबुक यूज़ किया, जितना भी इंस्टाग्राम यूज़ किया, या जितना भी यूट्यूब वीडियोज़ आपने देखा, उसके पीछे एक सर्वर, एक विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर या कुछ भी सर्वर हो, दैट वुड बी देयर। उसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और वो एप्लीकेशन चलता है एप्लीकेशन के बेसिस में, बट वो एप्लीकेशन चलने के लिए एक विंडोज सर्वर या एक लिनक्स सर्वर चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, विंडोज सर्वर चाहिए तो वो विंडोज सर्वर को हम लोग हैंडल करते हैं, दैट इज वी विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड वी मेक श्योर दैट सर्वर इज हेल्दी, इट्स अवेलेबल 24/7, इट डोंट गोज डाउन, दैट्स ऑल बेसिक stuff is done by us. Because of us you are able to watch that video, or you are able to watch, browse in the Facebook, Instagram and all stuff. So हमारा job, we feel a proud job. So that's why we have to stay 24/7. People think that कि IT में काम करता है फिर क्यों 24/7 काम करते हैं? It's because of call center. Call center also have its own value, but no, we have to manage the server live for 24 hours. 365 days में हमको हमारा वो सर्वर अप करना रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का लगेज ट्विटर में आता है ना, ट्वीट, अरे ये सर्वर डाउन हो गया क्या, why it is not working, why it is not working. So that's the reason. ट्विटर को भी अप करने को हमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अवेक रहना पड़ता है. So that's the basic job role that we do. That is system administrator. How to get into this job of system administrator? जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि बहुत सारे जॉब प्रोफाइल अंडर टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स और बहुत सारी चीज़ें. So if you are interested in Windows, you have to do a certification for Windows. It is not required that you have to do a certification, but you should have a basic knowledge of Windows. That is Windows Server 2000. अभी करंटली चल रहा है Windows Server 2016 and 2019 भी आ गया है. So you just have to need a basic knowledge of that. Any freshers who are willing to go with a Windows administrator, go ahead and read about Windows administrator. Google में आजकल सब मिलता है, YouTube में आजकल सब वीडियो मिलता है. Go ahead and study for that.
आपका इंटरेस्ट कौन सा भी फील्ड में हो, बी इट लिनक्स, बी इट AWS, बी इट अजूर, जो भी है आपको यूट्यूब में मिलेगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई करो उसका बारे में और आपको वो चीज़ मिल सकता है। एजुकेशन वाइज यू शुड बी अ ग्रेजुएट। आजकल आपको पता रहेगा कि कोई भी जॉब रोल में, इफ़ यू वांट अ जॉब रोल इन एन MNC कंपनी, इट्स minimum criteria is that you should be graduate, and if you are a graduate with engineering like computer science engineering, then it would be an upper hand। नहीं तो आप BSc कंप्यूटर साइंस से भी हो सकता है तो भी चलेगा, या कोई भी साइंस फील्ड से ग्रेजुएट है, that would be an up advantage। Still, if you are a BCom or a BA, you can do it. Then you need to do the certification of that particular system administrator course. For an example, if Windows, then you have to do a Windows certification. For Linux, you have to do a Linux certification. For AWS certification, Azure certification। वो सब डिटेल आपको YouTube में मिलेगा। उतना डिटेल ही बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि what is my job role and how you also can get into that job role। What are the job scope of system administrator in India and abroad is that system administrator is a job where I told you in beginning कि आपको 24 hour 365 days servers for Windows servers को ऊपर रखना चाहिए। It should be working healthy, fine, and same with other administrator also। So we work 24/7। So most of the process has been outsourced from different types of country because they know India is an hard working country और इसके लिए बहुत सारे opportunities आ रहे हैं IT में। and system engineer का job कभी जाने वाला नहीं है। It would be always staying the way। yes, market recession आता है तभी down होता है job, but once the market hits its peak you would definitely get a job in system administrator and it is definitely one of the best thing। जैसे कि आप लोग इंसान जो अपने बॉडी को संभालता है, सेम वे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर संभालता है वो सर्वर्स को या वो सिस्टम्स को जो कि हेल्दी रहना चाहिए हमेशा, so that other application work from that system। so that's the basic funda of a system administrator and we give our 100% to keep that server or that system alive 24/7। I am talking server because I am a Windows administrator, so मेरे मुंह में हमेशा servers आता है। Last but not the least, पैसा कितना मिलता है? What is the pay that you get? So if you are a beginner, yes, you would get a minimum salary package of 3 to 4 lakhs in system administrator। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज मांगता है and you would get minimum 3 to 4 lakhs of salary package for a system administrator। and if you are an experienced guy, then the package depends upon your level of skill and your level of experience and your level of knowledge। जैसा आपका इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो उस हिसाब से आप डिमांड कर सकते हैं। आई नो अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन अर्न समवेयर फ्रॉम like 12 lakhs of annual to 24 lakhs to 30 lakhs to 40 lakhs। there are people who are earning, so that's basically it। or what I earn a decent amount monthly, like 50 to 60,000 rupees that I earn and खुश होता हूँ। उसमें भी इंसेंटिव होते हैं। if you do something great work you get incentive, you get shift allowance, all that stuff। still you can get a manageable of 50 to 60,000 rupees into your pocket if you have an experience। and I am into system administration since 5 years। this is my 5th year। I am working as a Windows administrator। so as the level of experience increase, that's how your pay scale also increase and also you would get knowledge। there are different types of system engineers that you can do, system engineer work that you can do। जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ एक की पे नहीं स्टक होता है। आई एम इनटू विंडोज, उसके वैसा बहुत सारे चीज़ें। यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स इनटू डिफरेंट सिस्टम्स, लाइक यू कैन गो इनटू क्लाउड AWS, यू कैन गो इनटू क्लाउड ऑफ Azure। नॉट एन इशू, जस्ट मेक श्योर यू गिव योर 100% एंड यू आर डूइंग द बेस्ट। So that's it for today's video। and सबने जिसने पूछा what is my day-to-day earning, so I do a work for system engineer and I am a proud system engineer। and yes, so first of all, what is the responsibility? that is basically you monitor the basic health check of the server, you install some softwares on the servers as a Windows administrator। then how can you get into this industry of system engineer? You should have a basic education of graduate, you should be graduate। if it is from the science it would be upper hand, and even if you from a BCom background or from the arts background, commerce background or from arts background, you can get this job। make sure you do a certification of that Windows system administrator or Linux system administrator or any AWS Azure that you want to do। and thirdly, the work culture is best, has an MNC work culture। and last but not least,
The pay is also good. As a minimum system administrator, I told you would get minimum 3 to 4 lakhs of yearly annual income. That is about 25 to 30,000 a monthly. Yes, so that you would get it, and that's how you can get into this field of system administrator. Just give your best. If you are interested into system administrator, go ahead and apply for that job and enjoy. So chalo, that's it for today's video, and thank you for showing love on my previous video. Same उसी तरीके से ये वीडियो पे भी लव करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को. बीइंग फिट एंड फाइन, बीइंग फिट फॉर योरसेल्फ बिकॉज यूर स्पेशल. टेक केयर एंड बाय बाय.